Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS, and we are studying a module 2 storage works. In a module 2 we have already studied about the introduction of storage works, introduction of dam, what is dam, and classification of the dam. We have also studied about the factor governing a selection of a type of a dam. After that we have also studied about the selection of a site for the dam, right? After that we have studied about the types of earthen dam, components of earthen dam, their functions, causes of failures of earthen dam, seepage analysis, and in a last lecture we have also studied about what is phreatic line in a earthen dam, and seepage control measures. So in a seepage control measures there are two types of measures: embankment seepage control and foundation seepage control, right? So in a embankment seepage control measures, there will be a provision of a toe filter, horizontal drainage filter, protective filter downstream of the toe, a downstream course section, chimney drain. So these all are in a embankment seepage control. And in a foundation seepage control measures are impervious cutoff, upstream impervious blanket, downstream seepage bombs, drainage trenches, relief wells. So these all are the seepage control measures. Today we will study about the rock fill dams, right? So let's start rock fill dams. So a rock fill dam is a type of a embankment dam which uses a variable sizes of a rock to provide a stability and impervious membrane to provide a water tightness. Many different materials have been used for the membrane, which include the earth, concrete, steel, asphalt, concrete, etc. So the membrane may be placed either within the rock fill or on a upstream slope. So there are two types of rock fill dam. First one is the impervious membrane type, and the second one is the earth core type. Depending on the location of the membrane, the rock fill dams may be classified into two groups. First is a dam with an internal membrane, and second one is a dam with an external or a upstream membrane. So we will see both the types. So first figure shows a rock fill dam with the membrane, right? So rock fill dam with the membrane shows the central membrane, upstream membrane, and upstream membrane on a rubber masonry. So you can see in this in a center of rock fill dam there is a membrane provided. In a upstream membrane, upstream side of the dam, supporting in a supporting zone, this membrane is provided, and in a upstream membrane on a rubble masonry, right? So in upstream side there is a rubble masonry, and on a rubber masonry the membrane is provided. And in a second figure, rock fill dams with the earth core, right? So center in a center course, you can see in a both side of a center core there is a filter provided. In a sloping core, filter is provided in a slope side, and in upstream core filter is provided after this rock fill dam, right? So the rock fill dam with a central core has a following advantages, like less total area exposed to the water. Second one is a protection from effects of weathering, and third one is the shorter ground curtain length. And there are disadvantages of a rock fill dam is inability to construct the membrane or a core after the construction of a rock fill section. Second is an inaccessibility of a membrane for a damage inspection, right? And third is the inability to rectify the damage. So these all are the advantages and disadvantages of a rock fill dam.
foundation requirement for the rockfill dams are which we will result in a minimum settlement. The rock foundations are the best, but they should consist of a hard durable rock which cannot be softened or eroded by a water percolating from the reservoir. So it should be free from faults, shear zones and other structure weakness. So silt, clay, sand and organic material must be removed from the foundation area before a construction of a rockfill dam. So these are the requirements of the foundation of a rockfill dam. So now we will study about the gravity dam in a previous slide. So before going to start gravity dam, I would like to discuss what is a gravity dam. So a gravity dam is a solid structure made of a concrete or a masonry constructed across a river to create a reservoir in an upstream side. So gravity dam is one in which external forces such as a water pressure, wave pressure, silt pressure, uplift pressure, etc. are resisted by the weight of the dam itself. So the stability of the gravity dam depends on its weight. The gravity dam's section is a triangular section, right? You can see in a figure the cross section of gravity dam, and it is a triangular. So gravity dam is also called as a solid gravity dam to distinguish it from a hollow gravity dam, right? So in which hollow spaces are kept to reduce the weight. So a gravity dam is generally straight in a plan, and although sometimes it may be slightly curved, gravity dams are usually provided with the overflow spillway in some portion of its length, and the dam thus consists of two sections, namely a non-overflow section and overflow section, or we can say a spillway section. So in a figure you can see this side this is a reservoir and this is gravity dam. So the section is so proportionate that it resists various forces acting on it by weight. So gravity dam usually consists of two sections, जैसे मैंने आपको बोला कि non overflow section and overflow section, which we can also say a spillway section. So when a suitable foundation conditions are available, such dam can be constructed up to a great heights. So the highest gravity dam in the world is a Grand Dixens Dam in Switzerland. The height of this dam is 285 meter, and the second highest gravity dam is a Bhakra Dam in India, and the height of this dam is a 226 meter. So the ratio of a base width to the height of most gravity dam is less than the 1, and upstream face is vertical or slightly inclined. The slope of a downstream face varies between a 0.7 gem1 to 0.8 gem1. Now we will see what is the axis of a dam. So axis of a dam is a line of a upstream edge of a top or a crown of the dam. So you can see in this axis of a dam. The axis of a dam in a plan is also called a baseline of a dam, and the axis of the dam in a plan is usually straight, right? So basically in a cross section of the dam, the vertical line passing through the upstream edge of the top of the corner is called the axis of a dam, right? So the axis or a baseline of a dam may be straight or may be slightly curved. Second is the length of the dam. So the length of the dam is a distance from an abutment to the other measured along the axis of a dam at a level of a top of the dam. So you can see this length of the dam
right? So it is the usual practice to mark the distance from a left abutment to the right abutment. मतलब कि यहाँ से लेके दूसरी साइड का जो abutment है वहाँ तक का जो distance है उसको हम लोग length of the dam बोलेंगे. So the left abutment is one in which to the left of the person moving along with the current of water, right? सेकेंड है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल हाइट ऑफ द डैम, राइट? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल हाइट ऑफ द डैम? सो इट इज अ डिफरेंस इन एलिवेशंस ऑफ अ टॉप ऑफ द डैम एंड लोवेस्ट पॉइंट इन अ एक्सकेवेटर फाउंडेशन. टो एंड हिल, व्हाट इज टो एंड हिल? सो आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने रिटेनिंग वॉल्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है DRCS में. सो आप लोगों को पता ही है कि टो कौन सा होता है और डैम कौन सा होता है रिटेनिंग वॉल में. सो सेम ऐसे यहाँ पे भी वही होगा. द टो ऑफ द डैम इज अ डाउनस्ट्रीम एज ऑफ द बेस एंड अ हील इज अ अपस्ट्रीम ऑफ द अपस्ट्रीम एज ऑफ द बेस. नेक्स्ट है मैक्सिमम बेस विड्थ ऑफ द डैम. So the maximum base width of the dam is a maximum horizontal distance between the heel and toe of the maximum section of the dam in the middle of the valley, right? Next, hydraulic height of the dam. So it is equal to the difference in elevation of a highest controlled water surface on upstream of the dam like FRL and the lowest point in a river bed, right? So this is the hydraulic height of the dam. उसके बाद एक लास्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम. सो मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम और स्ट्रक्चर हाइट of the dam is a vertical distance between the lowest point in a foundation and top of the dam, right? अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी डैम्स. सो ग्रेविटी डैम्स आर रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल देन अर्थन डैम्स. सेकेंड, सो ग्रेविटी डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ एनी हाइट एंड प्रोवाइड अ suitable foundations are available to bear the stresses. Gravity dams are also well adapted for use and overflow spillway creased, right? And earth dams cannot be used as overflow dams. A gravity dam require least maintenance. Next is gravity dams are specially suited to such areas where there is a likelihood of a very drawn power. The failure of a gravity dam, if any, is not sudden, so that cannot fail suddenly. Scoring sluices can be used in a gravity dam to remove the silt deposited in a reservoir, and the gravity dam is cheaper in a long run, so the benefit cost ratio is always higher. So these all are the advantages of the gravity dam. Now we'll discuss about the disadvantages. So in a disadvantages, first is a gravity dam of a great height can be constructed only on a sound rock foundation, right? So sound rock foundations are required. Initial cost is more than a earthen dam. Take a longer time in a construction, mechanized plants are manufacturing and transporting concrete are require more skilled labor than a earthen dam, and it is very difficult to allow a subsequent rise in a height of a gravity. सो बेसिकली ग्रेविटी डैम्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि वो अर्थन डैम से ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग है, राइट? सेकंड है कि उसको हम लोग कोई भी हाइट तक बना सकते हैं हमारे पास अगर सूटेबल फाउंडेशन है तो. थर्ड है कि ग्रेविटी डैम ओवरफ्लो स्पिलवे क्रीस्ट, मतलब हम लोग जो बनाते हैं उसके अंदर हम लोग ग्रेविटी डैम्स के अंदर इजीली ओवरफ्लो स्पिलवे क्रीस्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो हम लोग अर्थन डैम में नहीं कर सकते हैं, राइट? उसके बाद है ग्रेविटी डैम में मेंटेनेंस कम है, हालांकि उसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है बट उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है.
Gravity dams are specially suited to such areas where heavy downpour, right? सो वहाँ पे हम लोग अर्थन डैम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग ग्रेविटी डैम वो एरिया में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और मोस्ट इफ़ेक्टिव बात क्या है कि ग्रेविटी डैम जो होता है उसका सडनली फेलियर नहीं हो जाता है, ठीक है. धीरे धीरे फेलियर होता है कि सबसे पहले क्रैक्स आती है या फिर सीपेज स्टार्ट होता है, तो हमें पता चल जाता है, तो हम लोग उसका मेंटेनेंस कर पाते हैं. बट अगर हम लोग अर्थन डैम देखें तो अर्थन डैम में क्या होता है कि सडनली फेलियर हो जाता है डैम का. और अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग रन में ग्रेविटी डैम हमें सस्ता पड़ता है क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, ठीक है. बट उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि डिसएडवांटेजेस. तो सबसे पहला था साउंड रॉक फाउंडेशंस हमें चाहिए. अगर हमें साउंड रॉक फाउंडेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट. सेकेंड है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है अर्थन डैम से कंपैरिजन में. थर्ड है कि ग्रेविटी डैम अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. क्योंकि वो हम ऐसे तैसे लेबर्स के साथ नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और लास्ट है कि हमें उसकी जो हाइट जो बढ़ानी है, राइट, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज कवर किए हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्रेविटी डैम. अब हम लोग देखेंगे कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम्स. तो ग्रेविटी डैम के ऊपर कौन से फोर्सेस होते हैं. तो सबसे पहला है वेट ऑफ द डैम, राइट, उसका खुद का वेट. हम लोगों ने आगे देखा था कि वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल हम लोग कैसे काउंट करते थे, राइट. सो वैसे ही यहाँ पे है वेट ऑफ द डैम. सो वेट ऑफ द डैम पर यूनिट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम एंड अ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. कि हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ हम लोग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. उसका मतलब डेंसिटी. सो हमें क्या मिलेगा, उसका टोटल वेट मिलेगा. जैसे कि कंक्रीट है और इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेक्शन, राइट. सो फॉर द शेक ऑफ द कन्वीनियंस द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम मे बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सेक्शंस इन अ सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स लाइक ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, राइट. सो हम लोग यही करते थे उसमें रिटेनिंग वॉल में कि हमारा जो शेप है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वन पार्ट है ट्रायंगुलर और सेकंड पार्ट है रेक्टेंगुलर. नाउ वेट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द डैम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी विल डू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. जैसे कि हम लोगों ने ट्रायंगुलर एरिया लिया है, सो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच. बी है विड्थ और एच है टोटल हाइट. और उसके साथ मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट मटेरियल मल्टीप्लाई कर दूँगी. लेट्स से कि मटेरियल हम लोगों ने कंक्रीट यूज़ किया है, राइट. सो वी विल मल्टीप्लाई विद द 25 because 25 is the grade of density of concrete, right. So basically if we want to find a weight of the dam, then what we will do, we will multiply a cross sectional area of that part with a specific weight of particular material which we have used in a construction of a gravity dam. So first force act होगा वो है weight of the dam. सेकेंड है वाटर प्रेशर, राइट. सो वाटर प्रेशर इज अ मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर ऑन अ अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम, राइट. सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ ट्रायंगुलर इन अ शेप, राइट. सो हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख लिया है. ये भी सेम हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, रिटेनिंग वॉल वाले चैप्टर में देखा है. तो जैसे कि अपस्ट्रीम फेस अगर हमारी वर्टिकल है तो हम लोग इजीली कर पाएंगे क्योंकि व्हेन अपस्ट्रीम फेस इज अ वर्टिकल द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज 0 एट द वाटर सरफेस एंड इज इक्वल टू gamma W इंटू एच एट द बेस, राइट. सो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट बेस हम लोग फाइंड कर पाएंगे gamma W इंटू एच. वहाँ पे gamma W क्या है, तो वो है यूनिट वेट ऑफ द वाटर, जो कितना होता है बेसिकली 9.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, राइट. और h क्या है, तो h है डेप्थ ऑफ द वाटर. तो ये क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट बेस मिल गया. अब मुझे टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, टोटल वाटर प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम, राइट.
सो वो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रायंगुलर शेप में आएगा, तो उसका एरिया इंटू हाइट कर लेंगे। सो उसका एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 1/2 इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू एच इंटू उसकी हाइट, अगेन हाइट हो गई, तो वो हमें कितना मिलेगा, 1/2 इंटू गैमा डब्ल्यू एच स्क्वायर। सो ये है टोटल प्रेशर, और वो कौन से पॉइंट पे लगेगा, तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर टू दैट सी जी, तो सी जी पॉइंट कहाँ पे आएगा, h/3 पे। सो वो प्रेशर लगेगा h/3 पे। सो ये थियोरी हम लोगों ने ऑलरेडी रिटेनिंग वॉल वाले चैप्टर में पढ़ी है, और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स भी कैलकुलेट किए हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप कोई एग्जांपल देखोगे तो। दूसरा पोर्शन होगा कि व्हेन अपस्ट्रीम फेस इज अ पार्शियली वर्टिकल एंड पार्शियली इंक्लाइंड, राइट। अगर अपस्ट्रीम फेस है वो अगर पार्शियली वर्टिकल है और पार्शियली इंक्लाइंड है, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे दो कंपोनेंट में हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तो हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया वैसे ही होगा, उसका प्रेशर का इक्वेशन हो जाएगा 1/2 इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, और वो कौन से पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो h/3 फ्रॉम द बेस। बट अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसको मैं PV कहूँगी, तो वेट ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन अ कॉलम, राइट, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और हमें थर्ड क्या करना है, टेल वाटर प्रेशर। सो टेल वाटर प्रेशर क्या है, सो if there is a tail water of a height h dash on a downstream side, then it will have a vertical and horizontal components at in a beam in a dam, right. So horizontal component के लिए हमारा प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा, वो हमें पता ही है, 1/2 इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, और वो कहाँ पे लगेगा, तो h/3 पे लगेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वेट ऑफ द वाटर कंटेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर कॉलम, वो जो आएगा वेट वो क्या होगा, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। सो हम लोगों ने दो फोर्सेस देखे आज, फर्स्ट फोर्स था वेट ऑफ द डैम एंड सेकेंड फोर्स लग रहा है ग्रेविटी डैम पे, वो है प्रेशर, वाटर प्रेशर। अब हम लोग आगे के जो फोर्सेस डैम पे लग रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।